the three evils of terrorism, extremism, and separatism. Excellencies, the achievement of lasting peace and security in the region is both a common concern as well as a responsibility of all honorable SCO leaders. Stability in Afghanistan is critical for achieving this common objective. The international community currently finds itself in a standstill with Afghanistan. The cascade of unmet expectations has meant that critical support needed by Afghanistan to ward off a grave humanitarian crisis, prevent an economic meltdown, and to combat terrorism has been withheld. This policy needs an urgent reset. The international community should meaningfully engage with the interim Afghan government to take the next steps. Similarly, the interim Afghan government must also take concrete measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity. A peaceful and stable Afghanistan will not only bring economic dividends to the Afghan people, but would also unlock the true economic potential of the SCO region as well as contribute to global peace, security, and progress. The SCO Afghanistan Contact Group has an important role to play in providing a platform for practical cooperation. Excellencies, climate-induced disaster is knocking on our doors. Being a global crisis that threatens humanity's survival, climate change demands global solidarity and a global response. It's time to act, and we must act now and immediately. Pakistan has lived through the horrors of climate change during the last year's devastating floods that took more than 1,700 precious lives, including those of children and babies born just few days ago, and inflicted unimaginable losses of over $30 billion on our economy. Pakistan is committed to working for a sustainable and nature-positive world that we owe to our future generations. We must also ensure that developed countries deliver on their assurances to provide enhanced support to developing countries in mitigating and adapting to the effects of climate change. Excellencies, poverty alleviation remains a pressing and burning issue for SU member states. The heightened military tensions across the globe and unprecedented hike in energy and food prices, coupled with economic recession in the aftermath of COVID-19 pandemic, have taken a heavy toll on our efforts to address the challenge. The presence of the largest number of poor people on the planet within SCO borders obliges us to have closer cooperation for poverty alleviation. I would like to thank and congratulate the SCO states on establishing the Special Working Group on Poverty Alleviation that was proposed by Pakistan. This working group has become operational and will provide an impetus to our collective efforts to eliminate poverty and improve the living standards of our people. Excellencies, to achieve the goal of sustainable peace, the fundamental rights and freedoms must be guaranteed to all, including those under occupation. Peace and communal harmony should replace violent ultra-nationalism and xenophobic ideologies, especially Islamophobia. Furthermore, we should resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination. There should be no place for the willful provocations and incitement to hatred, especially on religious grounds. The SCO stands for observance of the UN principles
of sovereignty, territorial integrity, and people's right to self-determination. We must ensure for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. With more than 40% of the world's population and almost a quarter of the world's GDP, the SCO represents a promising future, if only we can work together to seize it as a team and community. To achieve this cherished goal, I reaffirm Pakistan's unwavering support and commitment to address our common challenges and to realize our shared dreams of peace, prosperity, stability, and enhanced connectivity of the SCO region. I thank you all. नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत की काउंसिल का 23वां इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि SCO इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया को माशी और सलामती के चैलेंजेस का सामना है। राबते जदीद आलमी मईशत में कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। राबतों के फ़रोग से माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े, खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। मजीद उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की तमाम तर अक़साम की मज़म्मत करनी चाहिए। आलमी मसाइल के हल के लिए आलमी यकजहती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC के जरिए खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स कायम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस साल के आखिर में मवासलात से मुतालिक SCO इजलास की मेज़बानी भी करेगा। उन्होंने बेलारूस को अगले साल इजलास में मुकम्मल रुकनियत बनने पर मुबारकबाद भी पेश की और ईरानी सदर को तंजीम का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत की काउंसिल का 23वां इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। इस इजलास से उन्होंने कहा कि SCO इजलास एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब दुनिया को माशी और सलामती के चैलेंजेस का सामना है। राबते जो हैं वो जदीद आलमी मईशत में अब कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। राबतों के फ़रोग से ही माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खास तौर पर अफगानिस्तान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के मदद के लिए आगे बढ़े, खित्ते में पायदार अमन तमाम तंजीम के रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की तमाम अक़साम की मज़म्मत करते हैं हम। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पायदार और आलमी अमन के लिए आलमी यकजहती बहुत ज़रूरी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही खित्ते में माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म ने SCO अफगानिस्तान राबता ग्रुप में अहम किरदार अदा कर रहा है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि आलमी मसाइल के हल के लिए आलमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान को रुकनियत मिलने पर भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर को तंजीम का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेलारूस को भी अगले इजलास में मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस साल के आखिर में मवासलात से मुतालिक SCO इजलास की मेज़बानी भी करेगा। उसमें पूरे आलम इस्लाम, हर मुसलमान और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों में भी जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी दुनिया भर में इसकी शदीद मज़म्मत की, तो उसकी भी हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3-4 इशूज़ हैं जिस पर आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त जो सिंध भर में महसूस किया जा रहा है वो गैर एलानिया